Me doing the paper. ओके ब्रू सेंड कर दो, कोई मसला नहीं है, आई एक्सप्लेन। ओके। अच्छा जी। तुमसे कह रहा है कि भाई, अच्छा, जो 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 चीजें मैंने तुम्हें बोलनी है, लाइक दोज थिंग दैट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन, यू गाइस हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके? Okay, complete the table stay. Okay, acceleration, vector quantity है, you know that. Okay. Electrical resistance is a scalar quantity because it's a property of a body. Every property of a body is a scalar quantity. Momentum is a vector quantity, is a product of mass and velocity. Okay. आ जाओ भाई। State the conditions for the object to be in equilibrium. Okay, जल्दी आ जाओ, please. Please write the conditions quickly in the comment section. Quick, 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 guys. Ah, अच्छा जी। Okay. Then force is zero, resultant moment is zero, resultant force must be zero, resultant. Okay, fine, good है, good है। अच्छा, इसमें ना the best, like one of the best explanation that I've come across, that the resultant resultant force and in all the direction, okay, must be zero, okay, and um, resultant moment from a point should be zero, should be zero, okay. But if you just write resultant force equals to zero and resultant moment equals to zero, you'll get the mark for that. But एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा था, so I just wrote that down, okay? अगर हम इसकी मार्किंग की देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, तो resultant force in all look and resultant moment about any point or about a fixed point is zero. It's a better way of explaining, okay? और अगर मैं तुम्हें इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाऊं कि एग्जामिनर क्या कहता है, the majority of the candidate could state that the correct condition of an object to be in equilibrium. Weaker candidates sometimes refer to a zero moment about any point. Okay, zero moment is a incorrect terminology. You have to write resultant moment. Okay, it's like must. Okay, so zero moment about, okay, zero force in any direction without realizing that needed to be explicitly referred to the resultant moment and the resultant force. Another common mistake was to use the word momentum. Okay, fine. So these are the common mistakes that the student did. Okay, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ये कराएगी, वो करवाएगी, युसरा करवाएगी। युसरा प्लीज रीड कर लो यार। A floating solid cylinder is attached to a wire to the seabed as shown in figure 1.1. The density of water is 1.0 into 10 to the power 3 kg per meter cube. The base of the cylinder is at depth 0.190 meter below the surface of the water. The cylinder has a weight 28 Newton and a cross-sectional area of 0.0230 meter square. The wire and the central axis of the cylinder are both vertical. The cylinder is in equilibrium. अच्छा जी। क्या नाम है आपका? यार रुमैसा बार बार आ रहा है। युसरा। अच्छा युसरा, मुझे बताओगी ये इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सर, इसमें वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और ओके। टेंशन होगी क्योंकि एक वायर से अटैच है ये, शायद सही वायर ओके। लग है ना। हाँ जी, टेंशन स्ट्रिंग इन द है। वायर किधर को? और टेंशन इन द वायर डाउनवर्ड्स होगी आई गेस। ओके, गुड। और अपथ्रस्ट होगा एक अपवर्ड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। सही हो गया, ये आ गया, अब तो फाइन। चलो आगे आ जाओ। Calculate to the three significant figures the upthrust acting on the surface cylinder due to the water. अच्छा जी।
अब थ्रस्ट निकालना है, हाँ जी, क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पे तो हम जो है, टेंशन हमें दी हुई है क्या? टेंशन हमें नहीं दी हुई है। और वेट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, सही है। हमें डायरेक्टली अब थ्रस्ट निकालना पड़ेगा, सही है। क्या फॉर्मूला लगा लें अब थ्रस्ट का? रो जी एच ए था शायद, आई गेस, सही है। हाँ ये था। एच ए कह लो या वी कह लो, ओके। जी जी। अच्छा जी। सो रो जी एच ए, फाइन। अच्छा जी, और यहाँ पे आपके पास आ गया अपथ्रस्ट फोर्स होती है, सही है। ओके। सो डेंसिटी किसी, अच्छा बाय द वे, अपथ्रस्ट जब आप निकालो तो वाटर की वजह से निकालो, यू हैव टू यूज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट? So density of water is 1 exponent 3 as mentioned there, 9.81, right? 9.81, and H and A ये इनका इनकी टेंशन है, हाँ जी। क्या क्या लोग H हो रहे हैं? 0.190 मीटर जो है हम एच लेंगे, और ओके। ए तो दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ गया, जीरो पॉइंट पॉइंट, जीरो टू हाँ, हाँ सही हो गया। बस जीरो वो था। पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू 0.19 कितना आ रहा है? 42.86। 42.86, so 43 ले लेते हैं, सही है, 2SF के अंदर चलेगा। ओके, आगे आ जाइए। शो दैट द टेंशन टी इन द वायर इज 15 न्यूटन। इसे इक्वेट कर देंगे ना हम इस तरह से कि टेंशन और वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट हमने निकाल लिया, वेट पता है, तो टेंशन आ जाएगी। गुड हो गया। सो ये आ गया वेट, ये अब तरह से वो टेंशन, वो ये अब तरह से आ जाएगा, सही। सो अब तरह इज इक्वल्स टू वेट प्लस टेंशन। और अब तरह से आपके पास है 43, वेट आपके पास है 28, तो टेंशन आपके पास आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? 15 आ रही है, शो हो गया। 50। ओके, सही है जनाब, आगे आ जाइए। द वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.2 millimeter square. Calculate the stress in the wire. स्ट्रेस का स्ट्रेस फॉर्मूला? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, सही है। फोर्स, अच्छा। अब उसने कहा है तीन फोर्स है, कौन सी फोर्स ले लें? अब थ्रस्ट लें, टेंशन लें, या फिर वेट लें? टेंशन लेंगे, और क्या रीजन? क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन वायर पे लग रही है ना फोर्स, तो गुड, वेरी गुड, वायर पे। परफेक्ट हो गया। सही, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, किस तरह से लिखोगी कन्वर्ट करने के बाद? यस। इंटू 10⁻³ ओए, फिर। मिलीमीटर स्क्वायर्ड है। अच्छा मीटर, हाँ ठीक है, 10⁻⁶ होगा ना, माइनस वेरी थ्री गुड। और -3, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आ जाओ भाई, कितना आता है? 4.86 इंटू 10⁻⁶। 4.86, 4.86 ना, 4.9 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 आप कह रहे हो, ओके। 6। फाइन, चलो भाई, ओके, आगे आ जाइए। The surface of the water gradually rises until it is level with the top surface of the cylinder. State and explain qualitatively the variation of the strain energy stored in the wire as the water surface rises. हम्म, क्या होगा, कुछ आइडिया? गंदा सा क्वेश्चन पूछा है सोच ना? रही हूँ, हाँ स्ट्रेन से कुछ करना है, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मगर ओरिजिनल लेंथ और कुछ इस तरह से होता था ना, वो स्ट्रेन के हम्म। फॉर्मूले से अबे कुछ अबे रिलेट अबे करके अबे बताना ओए, होगा। स्ट्रेन नहीं, जस्ट फिर स्ट्रेन क्या होगा? एनर्जी, मतलब इलास्टिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी बेसिकली एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है, कितनी ज्यादा आपकी एक्सटेंशन है, कितनी कम एक्सटेंशन है, सही। अगर इसने कहा कि द सरफेस ऑफ द वाटर ग्रेजुअली राइजेस अंटिल द वाटर, अच्छा जी, सरफेस ऑफ द वाटर मतलब यहाँ तक कि पूरा सिलेंडर जो है ना वो, लाइक इट्स द होल सिलेंडर इज बेसिकली अंडर द वाटर नाउ, राइट? समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, सो व्हाट विल हैपन विद द टेंशन इफ, लाइक, आपका पूरा वो अंदर अंडर चले जाएगा, लाइक पूरा सिलेंडर नीचे चले जाएगा पानी के, तो क्या होगा टेंशन के साथ, क्या होगा? एनी आइडिया? टेंशन इंक्रीज होगी आई गेस, रीजन फॉर दैट? क्योंकि अब पूरा जो है एरिया बढ़ गया है ना जिसपे एक्ट कर वॉल्यूम, रहा है वॉल्यूम, एच। हाँ वॉल्यूम बढ़ वॉल्यूम या गया हाइट, जिसपे, हार्ड, ओके, गुड। हाँ हाइट इंक्रीज हो गई जिसपे वो एक्ट कर रही है टेंशन। ओए नहीं, गंदी बातें करी, शर्म नहीं आ रही? अबे, सही तो बोला था। नहीं ना ब्रो, आप ऐसा कहोगी दैट व्हेन द वॉल्यूम of the water or displaced water increases, so उससे आपका upthrust बढ़ जाएगा, right? And when the upthrust is greater, the weight is not changing, right?
So when the upthrust is greater, so there'll be and when you subtract with the weight, you'll get the greater tension in the wire. Okay. So जब आपके पास टेंशन इंक्रीज होगी, so there will be a greater force, and आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी जस्ट एफ टाइम एक्स होती है. So force increase हो गई तो स्ट्रेन एनर्जी will be increase or will be greater. Okay, clear ना? समझ आया? जी जी सर, समझ आ गया। Okay, इतना लंबा रिलेट करना पड़ेगा इसके लिए? करना तो पड़ेगा. चलो देखते हैं. When the body या सिलेंडर, इतनी लंबी करनी पड़ेगी ऐसा बोलना था. Okay, when the cylinder immerse completely, okay, the upthrust will increase, okay, weight remains the same, okay, and the um, tension will be greater, which uh, increases the elastic, yes, strain energy. Is that clear? जी सर, क्लियर। Okay, perfect. अच्छा जी, आगे आ जाओ. Gulvina, please read the question. Can you say something? Is your mic working? I don't think so. चलो कोई बात नहीं. हम करवा लेते हैं. ओके फाइन. यूसुफ से करवा लेते हैं. यूसुफ बेटा रीड कर लेगा. Acha. A ball is thrown vertically downwards to the ground as illustrated in figure 2.1. The ball is thrown with the speed u from a height of 1.5 meters. The ball then hits the ground with speed 8.7 meters per second. Assume that air resistance is negligible. Calculate speed u. हम्म. So इसमें ये होगा ना 2as is equals to v square minus u square. अबे डायरेक्ट तो बता रहा है. पहले डाटा तो कलेक्ट कर लो. एस यू इज अननोन. वी इज 8.7 8.7 and A is 9.81 and T is also unknown. Okay. So अब आप ये कह रहे हो कि क्या कह रहे हो आप? 2as is equals to v square minus u square. तो बस फिर सब्स्टिट्यूट करके u square is equals to v square minus 2as. ओके. सो एस आपके पास आ रहा है 1.5 1.5. and V squared is 8.7 7. and U square is unknown. So निकाल लो भाई. आपके पास आ जाए 6.8. ओके. ये आ गया आपने. सही हो गया. रूट करके बता रहे हो राइट? जी. सही है. अंडर रूट कर दिया आपने और आप कह रहे हो कि 6.8 आ गया. चलो सेंस बना रहे हैं. हाँ बना रहे हो. क्या आ जाओ. Okay, state how Newton's third law applies to the collision between the ball and the ground. अच्छा बाय द वे ये सबको लिखना है. जरा आ जाओ चैट बॉक्स में. आ जाओ जरा सारे लिख के बता दो क्या होगा. सही है. एंड यस यूसुफ आप क्या कहते हो? अच्छा, मैं बोलूंगा when the ball collides with the ground, हम्म. the ball exerts a force on the ground of equal magnitude uh, and then the ground exerts a force on the ball of equal magnitude, same magnitude but different direction, डिफरेंट क्या मतलब? ऑपोजिट बोल. You have to opposite say the direction. word opposite. क्योंकि different means different contain the opposite and the other condition as well. Fine. Yes, rest of you guys. Gulmina, Irfan, Imad, Yusra. Yeah. Are the same but in the opposite direction and contact time is same. Um, that you can say that the type of the force between the ball and the wall will be same. Okay. And Imad आपका कह रहा हूँ. सही है. And there will be okay fine. Every action. ओए ये नहीं लिखना होता है. Do not write this, Yusra.
Every action has an equal and opposite. The ball exert equal and opposite force. No, bro, you won't get mark for that. When the ball hits the ground, the ball exerts force equal to the force exerted by the ground, but in the opposite direction. Okay, Rayan, that's good. Force written on the ground where the ball is equal to. Okay, good. अच्छा जी. Okay. Okay. Basically इसमें ये लिखना होता है क्या कि बस the ball um, exerts exerts a contact force on the ground, okay, and ground will exert exerts अबे यार exerts ये कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है? है कांस्टेंट लिखना जरूरी होता है? पॉजिटिव लिखना क्या मतलब कांस्टेंट, आपने अबे कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स ये लिखा हुआ है। कांटेक्ट नॉट कांस्टेंट ओ कांटेक्ट। मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है कांटेक्ट ओके contact force on the ground and the ground will exert a contact force on the ball equal in magnitude and opposite in direction okay दूसरा बच्चे समझ रही है जी डायरेक्शन जी सर, समझ आ गया। ओके एक्शन रिएक्शन वाला कहीं पे भी नहीं आएगा अगर वो तुमसे कोई बोल रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ लिख दो उसके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू राइट एक्शन रिएक्शन ओके आपको लिखना होता है बॉडी ए exerts the force on body B and the body B will exert the same amount of force on body A right if you want to write the reaction the action time and reaction time so they'll remains the same okay but you are not allowed to write that way okay अच्छा इसकी एग्जाम रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ बी क्या क्या कह रहा है question number 2, part B. A significant proportion did not make it clear that there were two separate forces on the ball. There were two separate forces, okay? One acting on the ball and the other acting on the ground, okay? So your answer should refer that, okay? There were equal and opposite force. Some weaker candidate gave only the general statement of the Newton's third law without applying it. Okay, fine. चलो भाई आ जाओ बेटा आगे आ जाओ यूसुफ Sorry, Haji. The ball is in contact with the ground for a time of 0.091 seconds. The ball rebounds vertically and leaves the ground with speed 5.4. The mass of the ball is 0.059. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball during the collision. ये वाला P is equals to m v minus u because वो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो माइनस हो जाएगी, स्पीड प्लस हो जाएगा दोनों। वेरी गुड हो गया बेहतरीन हो गया इसमें यही सबसे बड़ी गलती यही थी जो बच्चों ने की हुई होती है कि उन्होंने माइनस प्लस की डायरेक्शन नहीं ली हुई होती ओके सो यू हैव टू असाइन द डायरेक्शन जाने वाली को पॉजिटिव ले लो मे भी आने वाली को नेगेटिव ले लो तुम्हारे ऊपर है राइट बट यू हैव टू कंसिडर द डायरेक्शन ओके सो द 5.4 plus 8.7 okay 8.7 is the velocity before the collision 5.4 after the collision mass में दे रखा है 0.59 kgs 0.59 kgs okay how much You get 0.83. 0.83 चेंज मोमेंटम आ गया ओके अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी राउंडिंग ठीक है कि नहीं, लेकिन 0.83 आया। एक मिनट ना चेक कर लेते हैं आपकी वैल्यू क्या आ रही थी नहीं, 0.8319। 8319 हाँ सही है दैट्स करेक्ट हाँ सही आ रही 0.83 ओके आगे आ जाओ Okay. Next question was determine the magnitude of the average resultant force that acts on the ball during the collision. तो impulse over time करेंगे ना बस, ओके divide by time. change in momentum divided by change in time okay so that will give you the change in momentum as 0.83 right the change in time was 0.091 0.091 okay how much You get 9.1.
9.1, ओके परफेक्ट, आगे आ जाइए। अच्छा, अच्छा। बिफोर मूविंग ऑन, वेट वेट वेट, बिफोर मूविंग हम्म। ऑन, जब यहाँ पे अब हो, सही है, सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली देयर इज अ वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ओके, सही हो गया। सो आपके पास जो है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और आपके पास जो है जो एवरेज फोर्स है अभी आपने जो निकाली है, determine the magnitude of the average resultant force that act on the ball during the collision, okay, so on the ball, okay, एक मिनट, act on the ball during the collision, fine, so यहाँ पे ऑन द बॉल का मतलब ये है कि ग्राउंड जो है वो बॉल पे इस डायरेक्शन में एवरेज फोर्स लगा रहा होगा, सही है, और दैट इज जो हमने निकाली 9.1 निकाली, राइट, क्लियर हो गया। जी। अच्छा जी। जी, ओके जी, आगे आ जाओ, ये हो गई है, अच्छा जी, अब ये आ जाओ। अच्छा, use your answer in C part 2 to calculate the magnitude of the average resulting force, uh, average force exerted by the ground on the ball during the collision. So ये करेंगे कि वेट ले लेंगे 0.05 इंटू 9.81, फिर हम्म, एवरेज फोर्स माइनस वेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट, फिर वेट प्लस द 9.1। यस, यानी अब आपके पास यहाँ पे देख लो, सो अब बेसिकली अब आपने जो है ना, इन्होंने कहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल, ओके, सो बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल में एक तो ये था कि जो 9.1 आपने निकाला, राइट, दैट वाज बेसिकली बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल, ओके, एंड द अदर वन इज द वेट ऑफ द बॉल इटसेल्फ, के उसके अगेंस्ट में द ग्राउंड विल एक्सर्ट द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द बॉल एज वेल, राइट, सो जो आपके पास वो आ रहा है, क्या आ रहा था, मैथ्स कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, सो यहाँ पे जब मास इंटू 9.81 करोगे, सो you'll get a downward force, right, उसी corresponding ground will going to apply an upward force, and that upward force will be added with the 9.81 to get the resultant one, okay, clear हो गया, because they're asking for the force exerted by the ground on the ball, okay, be very careful, they're not asking the force exerted on the ball, okay, अच्छा जी, चलो, कितना आ रहा है भाई, 9.1 नाइन प्लस, पॉइंट सिक्स सेवन आना तो 9.7 होगी। ओके, इंटू 9.81 कर दिया, ओके, हाउ मच, तो जीरो 9.7, पॉइंट जीरो फाइव नाइन नहीं। अच्छा, ओके, यस, सॉरी, तो कितना आपने बताया, 7 एंड में आएगा आपके पास। 9.7, गुड हो गया। The ball was thrown downwards at time t0 and hits the ground at time t is equals to t. Sketch a graph that shows the variation of the speed of the ball with time t from time t is equals to 0 to time t is equals to t. तो बस यही होगा ना, लाइक वो ऊपर जा रही है और उसका ग्रेडियंट लाइक पॉजिटिव है टिल क्यों टी। बे, ऊपर जा रही तब तो ग्रेडियंट पॉजिटिव कैसे आ गया, नहीं मतलब द ग्रेडियंट ऊपर जा रहा है, लाइक लाइन ऊपर जा रही है वेट, कि नहीं। द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, अच्छा, बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड एट टी इक्वल्स टू जीरो, ओके, सो एट टी इक्वल्स टू जीरो आपने उसको डाउनवर्ड थ्रो किया, सही है, एंड इट हिट्स द ग्राउंड एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, ओके फाइन, सो अच्छा, अब आपने जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको फेंका होगा, so initial velocity is not zero, right, because it is thrown, okay, so initial velocity should be greater than zero at time t equals to zero, right, and before hitting the ground it will have some sort of final velocity and it looks like this, okay, clear, so this तो will ये be u, समझ में आया। क्या चीज नहीं समझ में आई भाई, मतलब ये आप स्टार्टिंग से क्यों नहीं कर रहे हो? हाउ डू यू नो इट्स कांस्टेंट? अबे 9.81 है ना, ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल उसने रखी हुई है, लिखा हुआ है उसमें? हाँ, ओ अच्छा। ऑब्वियसली बात है, और बोलो, और बोलो, और क्या मसला है, मतलब आप जीरो से शुरू क्यों नहीं कर रहे? आपके जहन में क्या आ रहा है, आप मुझे बताओ। नहीं, मुझे ये हो रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में तो वो रेस्ट से शुरू किया होगा ना। बच्चा, उसने उसने कहा थ्रो, राइट, पहली चीज, सही है,
दूसरी चीज, ये बेसिकली जिस सिनेरियो का ग्राफ बना रहे, द सिनेरियो इज राइट हियर विद इनिशियल वेलोसिटी u, so it has some initial velocity, right? It's not like released from the rest, okay? Clear? Oh, okay. So समझ आ that's गया. why, okay? And please, whenever it writes thrown, तो इसका मतलब है कि it should have some initial velocity, right? Okay? And Okay, okay. since it is moving downward, so it will start accelerating because of the fact that it is moving in the direction of gravity. So ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, right? Like this, okay? So just before hitting the ground, it will have some amount of final velocity just before hitting the ground, okay? So वो final velocity आ गई. चलो, okay, आगे आ जाओ. Okay, in practice, air resistance is not negligible. State and explain the variation, if any, with time t of the gradient of the graph, and when air resistance is not negligible. Hmm. State and explain the variation, if any, t of the gradient of the graph. Air resistance is not negligible. If the air resistance will be significant, this means the acceleration of the ball decreases from 9.81 to some lesser value. And if you're plotting on the speed time graph, so the speed time graph will start looking like this. Okay? क्या ये बात समझता है भाई? Oh, okay, sorry. Okay. So now they're saying if any state and explain the variation if any with the time t of the gradient of the ball when, okay, so gradient या हम क्या कहें इसको? अच्छा, ग्रेडियंट की बात को, ओके. सो हम ये कह रहे हैं कि भाई द एयर रेजिस्टेंस reduces the acceleration, okay? So the gradient of the graph will be smaller, okay? अच्छा, जब ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ स्मॉलर होगा, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो बस बस स्मॉलर होगा, काफी हो जाएगा. सही है, इतना काफी है. अगर हम इसको देख लें, so the majority of the candidate realized that they needed to sketch a line of a constant positive gradient. This was for the graph, okay? A common mistake was to draw a straight line from the origin, okay? समझ रहे हो यूसुफ? This is a common mistake. जी Okay, candidates should be जी जी. encouraged to always use a ruler when drawing this straight line on the graph, okay? Actually, most candidates realized that the gradient would decrease with the time, and some mentioned that this would be due to an increase in the air resistance. Only strongest candidate get full explanation of how the increasing air resistance would lead to the decreasing resultant force on the ball and thus decreasing acceleration. Maybe I also didn't mention that decreasing resultant force. Okay, so the increasing air resistance reduces the acceleration. It's not making sense to them. Okay, so increasing air resistance uh, decreases the resultant force, okay, which reduces the acceleration, and then explanation is correct. Okay, आ जाओ भाई. Now let's move on. कौन करेगा? Imad, please read the question. A child of weight 330 Newton is at point X and at the top of the slide. The slide is at the edge of swimming pool as shown in figure 3.1. The child moves from rest to the lowest point of the slide, that is vertical distance of 4 meters below X. The child continues moving towards point Y, which is at end of the slide and a vertical distance of 1.1 meters above the lowest point. The kinetic energy of the child at Y is 540 joules. Calculate the difference in gravitational potential energy of the child at point X and Y. Hmm. So you can find the GPE at X, GPE at Y, and then you can subtract it, or you can just do the difference in GPE would be mg and then change in height. Okay, so what's the mass, by the way? The child of the weight is given as 330 Newton. Okay, and then the h is 4 minus 1.1. Okay, how much?
Sir, 960. 960. Okay. अच्छा, by the way, the child moved from the rest. Okay, थोड़ा सा analyze कर लेते हैं. So if the child moved from the rest, so initially will it have any kinetic energy at x? No, sir, it will be 0. Kinetic energy will be zero. Okay. At the end, at y, the kinetic energy is given as 560. Okay. The kinetic energy is given as 560. Okay. But Sir, the 540. sorry. But the total change in the gravitational potential energy is 960. Okay. So the rest of the energy will be converting in the form of, yes, quick. Sir, work done against friction. Good. Perfect. Okay. आगे आ जाओ. आगे. An average frictional force of 52 Newton acts on the child when moving from x to y. By considering changes of energy, determine the distance moved by the child from x to y. So you subtract the energies and you do Okay. force times displacement. So basically you are doing law of conservation of energy. यूसुफ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, वो माइक जल्दी से खोलिए। Okay. So 960 minus 540 equals to work done against the resistive force. So I'm just applying the law of conservation of energy, that the total energy at x should be equal to total energy at y. Total energy at x should be in the form of GPE only, which is 960, and total energy at y will be due to the kinetic energy and the work done against the friction or the resistive forces. Okay. So when you subtract it, you'll get whatever you get. Just divide it by 52 and you'll get R. Oh, sorry, you'll get X. Okay. Okay. Yes, how much? Oh, sorry, किस बात के लिए सॉरी? आगे पीछे हो गया. sir, 8.1 meters. 8.1 meters. Good. Let's move on. The child leaves the slide at point y with a velocity that is at an angle of 41 degrees to the horizontal. The path of the child through the air is shown in figure 3.2. Point Z is the highest point on the path of the child through the air. Assume that air resistance is negligible. Calculate the speed of the child at point y. At point Y. Okay. क्या करोगे आप? You know that the Sir, did kinetic they give energy us at, the huh? kinetic energy at point y? Yes, very good. And So you can use the kinetic energy at point Y, half mv squared. Okay, 540 into 2 divided by mass is 30 divided by 9, 330. 330 divided by 9.81. Okay, is equals to V. Please put the brackets on and then whole thing under root. sir, 32.1. So 32 only. सही जा रहे हैं भाई, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. Sir, wait, I didn't root. Okay, yes, सही है. How much? Sir, 5.7 5.7. Good हो गया. Okay, let's move on. at point z. The speed at point Z. Any idea? You can first find out the component of the velocity in the x direction and in the y direction. And since the air resistance, whoa. So they're saying, Sir, isn't z max height? huh? Yes, but you are not allowed to use kinematics, I think. Because they're saying the child leaves the slide at y with a velocity, okay, at an angle, the path of the child through the air. So maybe जो है ना वो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन सही का ना बन रहा हो, maybe. तो क्या करें? एनर्जीज को यूज कर लें या जस्ट हम यूज कर लें? लेट्स सी if I have any other things. Sir, how you can't use energy? You don't have the है ना? height. I have, yes. So I think we have to Sir, use kinematics, assuming that the sir, air maybe is. Mhm. maybe find the time at point z. No, everything, every calculation required to assume or needed to assume that the air resistance is zero. Okay.
Like in the air mean the air is still not moving. Okay, and cos 41. Okay, just find out, check करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है. It's 5.7, it's not 5.1. How much? 4.3. 4.3. Okay. Okay, fine. They're also doing the same way. And let's see कि इनकी एग्जाम रिपोर्ट कुछ कह रही है. The gradient of the graph would be. अच्छा जी, एक मिनट. Some candidate use an incorrect trigonometry function, usually is sine instead of cos. Other incorrectly stated that the speed will be zero, possibly due to the confusion between the horizontal and the vertical component of the velocity at that point. Okay, fine. Chalo, good हो Sir, गया. but how will we know if they're asking for the horizontal or the velocity? Oye, at maximum height, it's obvious there won't be any vertical velocity, right? That's why it's moving horizontally at point Z. Getting? Okay, but we can write zero as well. No. Look, उन्होंने कहा, look, they're saying calculate the speed. Whenever they say the speed specifically, yeah, just generally the speed or the velocity, this always mean that the resultant speed at that point. Okay, this doesn't mean you have to consider any one component. You have to consider both the component and you have to take the resultant of the velocity. Right? Getting? So So, if yes. so you have to add both the components, right? Yes, but you don't have Yeah, any but vertical component, so yeah, that's that's why. right. So, 0 plus v cos theta is equal to Yes. the v at that point. That's Actually, right. yes, yes, yes. ओके, चलो हो गया, क्लियर है, ये बात क्लियर है. जी. आ जाओ भाई इरफान, you have to read the question. For a progressive wave, state what is meant by speed. ओके जी, आ जाओ भाई, डेफिनेशन लिख दो सारे के सारे जल्दी जल्दी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पीरियड, क्विक. डेफिनेशन ऑफ द पीरियड, एंड जिन्होंने डेफिनेशन लिख ली है प्लीज राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अच्छा जी, ओके. यस, रेस्ट ऑफ यू गाइस. टाइम टेकन. ओके. For one complete wave to form. Okay, Yusuf, Irfan. Time taken for one complete wave या one complete oscillation. अच्छा जी, अगले वाले लिख दो प्लीज. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गाइस. Yes, cycle is also accepted. Okay. Okay, आगे लिख दो प्लीज. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गाइस. Sir, what is the definition of frequency again? Time taken. Okay, sorry. Number of wave passing per unit time. Yeah, passing through a Sir, point per unit time. we can't say per second. No, in most of the paper, in most of the examiner report, they didn't accept that definition. Okay. Principle of superposition, guys. Principle of superposition. When two waves overlap, the resultant displacement will be the algebraic sum of two individual
waves displacements. The resultant displacement. Bro, you also have to write when the two wave overlap, okay? Otherwise, it won't be accepted. When the two wave meet a point in the space, इतनी heavy मत लिखो यार. The resultant displacement of the new wave is the algebraic sum of the displacement of an individual wave. Okay, good हो गया, गुलमीना good हो गया. युसरा कहाँ हो? युसरा, सर आपने लिख ली थी तो मैंने मिटा दी पूरी, अबे यही लिख रही थी मैं भी यही लिख रही थी। कसम से. Okay, fine. जी जी सर, एग्जैक्टली यही लिख रही थी। अच्छा, सो ब्रो भेजना होता है तब भी मिटाना नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई, मुझे तो कोई ना कोई गलती कीड़े मिल ही जाएंगे तुम्हारे उसमें. अच्छा खैर खैर, कोई बात नहीं. ओके इरफान, प्लीज रीड ऑन. यस इरफान. Yeah, okay. Electromagnetic waves of wavelength 0.04 meter are emitted in phase from sources X and Y and travel in vacuum. The arrangement of sources is shown in figure 4.1. A हम्म. detector moves along the path that is parallel to the line XY. A pattern of intensity maxima and minima is detected. ओके. अच्छा जी, बाय द वे, डिटेक्टेड. ओके. इन्होंने बाय द वे दे मेंशन दैट यू हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, electromagnetic wave, which mean the speed is obvious, 3 exponent 8. Okay, they've also said that they're in phase, so you can use the path difference as n lambda, and lambda in phase difference as n times 360. Okay, and okay, fine. A detector move along. Okay, intensity maxima and minima. Okay, the distance. Okay, so you have given the path difference. Okay, please move on. Calculate the period in. Wait, this one. Yeah, okay. Wait. Mm, contain the wave x or y. Okay. So did they mention the wavelength? Yep, the wavelength is given. अच्छा, युसरा और गुलमीना, आप लोग का वेव वो है, वीक है. मुझे तुम लोग के आंसर चाहिए फौरन फौरन, हर पार्ट के इस क्वेश्चन के. ओके, एवरी पार्ट. सो द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज गिवन. फ्रॉम विच रीजन इट बिलोंग टू? यस गाइस, एनीवन? इरफान, सर भेज दिया क्या भेजा? आंसर। कहाँ पे? और किस चीज का आंसर भेजोगे तुम? पार्ट वन का। क्या भेजा? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? सर आपके जूम चैट पे है ना सर आंसर। बट मुझे, मेरे पास जूम चैट पे तो नहीं सी वो. किसी और मैं को तो तब भेजे से आप. भेज रहा किसी और को आप भेज रहे हो. हूँ। मुझे नहीं नहीं, वेट, है ना. मैं कहाँ मलिक को भेज रहा हूँ। But I'm not receiving any of your answer. The last I received from Irfan and then Gulmina at 3:32. The Irfan sent me at 3:33, and then Irfan sent me at, okay. I'm not receiving anything from you yet for like for a while. Sir, he's sending in the iPad, but not the laptop. What? दोनों में एक ही चीज है भाई. दोनों में एक ही लाइक जूम कनेक्टेड है. सर पता नहीं, तब से भेज रहा हूँ। अच्छा, देख। ये मेरी गलती नहीं है, इस पे यहाँ पे आना चाहिए इसका. Between the 2 point wave, okay, between the 2 point in phase नहीं चाहिए bro. When the two wave meet of the same it's not required by the way. The resultant displacement is equal. The resultant displacement is equal to the sum of the individual. अच्छा, by the way, मैं तुम्हें इसकी एग्जाम रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ. क्वेश्चन 4 की. Some candidate need to be precise statement. Some candidate needed to give a precise statement of what is meant by that period of the wave. Vague statements such as the time for one wave to form or the time for wave to pass could not give in credit. Okay, be very careful. Okay. Weakest candidate sometimes confuses the period of the wave with a with a frequency. Irfan, Imad, देख रहे हो? अच्छा जी, the principle of superposition generally stated some candidate incorrectly refer to the amplitude instead of displacement in their statements. Okay, amplitude mention नहीं करना है. Okay, and यहाँ पे तुम देख लो इसके.
Definition: time for one oscillation, one vibration, one cycle. Time between the adjacent wavefront to pass. The shortest time between the two wavefronts. Okay. Yusuf, is that clear? Yes, clear. Okay. आ जाओ भाई. इंफ्रारेड अबे हाँ इसका आ गया. अच्छा इंफ्रारेड. इंफ्रारेड नहीं है ब्रो, माइक्रोवेव है. माइक्रोवेव है. ओके. माइक्रोवेव की सेंटीमीटर में होती है. दिस इज एक्सपेरिमेंट -2 माइक्रोवेव है, सही है. और इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट 5 एक्सपेरिमेंट 6 में होती है. ओके फाइन. नाउ दे आर सेइंग पिको सेकंड के अंदर वेवलेंथ निकालनी है. पिको सेकंड के अंदर पीरियड निकालना है. सॉरी, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा कर लिया आपने, या वी इक्वल्स टू टाइम पीरियड लैम्डा ओवर टी कर लिया आपने. सिंपल सी चीज है, सिंपल सी. स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 exponent 8, and time is also given, or time is basically what you have to find out. 0.04 over t. Okay, so t equals to 0.04 divided by 3 exponent 8. How much? 133.333 exponent 12. 133.333 exponent -12. Okay, and you know that -12 can be replaced by the pico. Okay, so 130. Clear हो गया? अच्छा जी, आ जाओ भाई इरफान. यस इरफान. Show the path difference at point Z between the waves from x and y is 3.5 lambda, where lambda is the wavelength of the wave. Hmm. Can you show it? Yusra and Gulmina, can you guys also show it? Yes. अच्छा जी. पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आप लगा लोगे एन लैम्डा. ओके. सो पाथ इज गिवन एज 1.1.38 minus 1.24. Okay. 1.38 minus 1.24. Okay, equals to n. Lambda is 0.04. How much? Yes, कितना आ रहा है? 3.5. 3.5. So the value of n is 3.5. Right now you can put it back in the path difference formula. So 3.5 lambda. Okay. So it is something that we have to show. Okay. Acha, by the way, in a show that question, you have to be very careful. Okay. So I think कि हम इसको एक दो स्टेप और करके लिख देते हैं, cause maybe they won't give me mark for that. अगर मैं ऐसे लिखूँ, so path difference आप कर दो 1.38 minus 1.24, and then you just move on to the other part. Okay, part 3 में आपको कह रहा है कि successful candidate recognize the common word, show and carefully represent all this step in the calculation. Significant proportion of the weak candidate did not attempt this response. Okay, yes Irfan, please move on. They have Calculate the asked phase you. difference between the waves at point Z. Okay. Gulmina, if you write that, so that would be considered as a very good answer. Like you can say that okay, path difference is basically equal to x to y. Okay. Sorry, x to z minus y to z. Okay, like x to z and then y to z, and then follow your working. Okay, that's good. अच्छा जी, path difference you have, phase difference you have 3.5 lambda का phase difference है. One lambda produces the phase difference of 360 degrees. Okay, so if you have 3.5 lambdas, so that will be produces how much? 1080 and 1160, I think. How much? Just multiply 3.5 with 360. 1260. 1260. Fine. Okay. आगे आ जाओ भाई. Yes, Irfan. The waves from x alone have the same amplitude at point Z as the waves from y alone. State the intensity of the waves at point Z. Okay. You can see that at point Z there is a 3.5 lambda of path difference. मुझे बताओगे, will there be a constructive interference or destructive interference? Yes, guys.
Destructive. 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 Very good. Very good. So now they're asking the intensity, right? So if we have the destructive interference, so we'll have the least incentive intensity or zero intensity, right? Zero intensity. Very good, बच्चों. Very good. आगे आ जाओ इरफान. The frequency of the waves from X and Y are both decreased to the same lower value. The waves stay within the same region of the electromagnetic spectrum. Despite the effect on this change on the pattern of intensity maxima and minima along the path of the detector. Hmm. So if you are lowering the okay, the frequencies are lowered. सही हो गया. वेवलेंथ दोनों की इंक्रीज कर दी आपने. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ व्हिच मीन द पाथ डिफरेंस. ओके, path difference over lambda will give you n. So the path difference value will be increased. बल्कि नहीं नहीं, उससे उससे हमें रिलेट करने की जरूरत नहीं है. इन्होंने कहा एडजेसेंट मैक्सिमा या मिनिमा ना, हम इसको कह रहे हैं एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर एस ओवर ए, राइट? बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ सम डबल स्लिट थिंग. Okay, so इन्होंने कहा कि that your lambda is increasing, right? Because you are decreasing the frequency, right? You are decreasing the frequency to a lower value, so this means you are increasing the wavelength. Increasing the wavelength mean the separation between the adjacent maximas or maxima and minima will be further separated or further apart. Okay, so the distance between the maxima and minimum, yeah, maxima and maxima will be further. Okay, चलो. Maxima and minima. मैक्सिमम मैक्सिमम रख दो, या द डिफरेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मैक्सिमा इस तरह से कह दो, या मैक्सिमम मिनिमा कह दो, जो भी कहना है कह दो. सही है, दोनों हो जाएगा. ओके, लेट्स सी. uh that the distance between the adjacent maxima, so look, adjacent maxima, okay, the better word is adjacent maxima rather than maxima. Some candidate refer to the bright and dark spot. Fine. By the way, you cannot say the bright and dark spot, okay? Because it is not in the visible region, okay? So it is in the it is in the microwave region, so you cannot see it, okay? वो आप सिर्फ डिटेक्ट कर रहे होगे, and आप देख रहे होगे कि भाई मैक्सिमम बन रहा है मिनिमम बन रहा है, ओके? चलो भाई आ जाओ. अरे भाई साहब, हैवी क्वेश्चन आ गया. हैवी क्वेश्चन आ गया. यूसरा नहीं करना. यूसरा बेटा आ जाओ, रीड कर लो. define the ohm. हम्म. अंकल का नाम था, लॉ लिख voltage के per मर amp गए थे. voltage per ampere. कम ऑन, नो. यही तो था, वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना. अरे बच्चा नहीं ना. वोल्टेज क्यों कह रही हो? Ohms is a unit na, so it has to be defined in term of unit and not quantity. Volts Yes, it per should be ampere, yeah. volts per ampere. Okay. अच्छा अच्छा, ओके, volts per ampere. हाँ, volts per ampere. Okay. There are many such definition in the electricity chapter that ask you to define the units like the coulombs or the volts, okay, or the ohms, okay. So you have to define all of these quantities in all of these units in term of units, okay. Please इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ रही हो ना? जी सर. ओके, आगे आ A, जाइए. a wire is made of metal of resistivity rho. The length L of the wire is gradually increased. Assume that the volume V of the wire remains constant and its length is increased. Show that the resistance R is of the exceeding wire is proportional to L square. हम्म. क्या करें? ऊपर से गया क्वेश्चन. Resistance is equals to वही वाला resistivity का फॉर्मूला जो लगता है, resistance equals to resistivity into L upon A. ओके, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करें? A into L जो है वो वॉल्यूम होता है. हम्म. सो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे एल एल से मल्टीप्लाई कर दें, सही, टू मेक द डिनोमिनेटर जी सर. वॉल्यूम, L square divided by volume. Okay, and now show that the resistance is extending wire is proportional to L square, right? So yes, हम ये कह सकते हैं कि भाई rho and volume are constant, I think. The gradual increase assume the volume in the wire. Okay, so हम ये कह सकते हैं कि that the rho and
volume rho and v are constants. So r is directly proportional to L squared. Fine, चलिए आगे आ जाइए. The battery of electromotive force EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistor of resistance R as shown in figure 5.1. An ammeter measures the current I in the circuit. A voltmeter measures the potential difference V across the variable resistor. Okay, सही हो गया. चलें. The resistance R is now varied to change the value of I and V. The variation of I of V is shown in figure 5.2. Using figure 5.2, state the EMF of the battery. कैसे? Any idea? सर जो शुरू की वोल्टेज होगा मेरे ख्याल में वही बैटरी का ईएमएफ होगा. You? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है ये चैप्टर अभी. तुक्का. अच्छा चलो आसान करते हैं. अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, जैसे अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं तो क्या क्या बनेगा किरचॉफ लॉ The से? second the second law of average, right? ओके. Sum of Bro, the bro, sum of bro. EMFs. Not that. Like in the circuit. Like how will you apply it in the circuit? V and R. Okay. So the EMF is basically voltage across the internal resistance plus voltage across the R. Okay. Now they're basically plotting the graph of voltage, voltmeter, okay, and ammeter, okay. So this is what they're plotting, okay. So we have to make V the subject, okay, and E minus VR, small r, okay, and you can expand V small r into voltage, current times the internal resistance, okay. Getting guys? And then just इसको एक linearize कर दो minus IR plus E, okay. Now you can just compare it. So y equals to mx plus c. सॉरी उल्टा हो गया. इसको अगर मैं लिख देता हूँ r टाइम्स आई, उससे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता है, मैथ्स का रूल तुम जानते हो, ओके. एंड प्लस सी, राइट. सो यू कैन सी दैट your your gradient is basically the internal resistance, okay, internal resistance, and your intercept is going to be your EMF, okay. You say that clear, guys? That clear? जी सर. परफेक्ट हो गया, सही है. देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दे आस्क यू टू फॉर्म द इक्वेशन एंड देन दे आस्क यू टू सॉल्व इट, ओके. अगर वो कुछ किसी क्वेश्चन में नहीं कह रहा है लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो जस्ट मेक द इक्वेशन फर्स्ट, ओके. जिस चीज को वो एक्स एक्सिस पे रख रहा है, जिसको वो वाई एक्सिस पे रख रहा है, सो दे आर यूजिंग वी ऑन द वाई एक्सिस एंड आई ऑन द एक्स एक्सिस. एंड अब आप देख लो, अब आपको पता है कि भाई 2.4 आ रहा है, सो 2.4 इसकी वैल्यू आ रही है, ओके. आगे आ जाइए. Use figure 5.2 to determine the power dissipated in the variable resistor when there is current of 5 amperes. ओके. अच्छा जी, व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, फाइन. क्या कर सकते हैं हम? uh, P is equals to I square R, नहीं, IV अबे लगा एक सकते मिनट हैं एक ना. मिनट When there's IV. a current of, अबे एक मिनट तो दो यार, हड्डा ही कर लोगे तुम. When there's a current of 5 एम्पियर, okay. करंट ऑफ 5 एम्पियर, सही है, लगा दिया. इन द वेरिएबल रेजिस्टर, सही है. सो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है? सो द कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज 1.123, 1.3, okay. So at I equals to 5.0, the voltage is 1.3, right? Now V equals to IR लगा लो. Sorry, I equals to P equals to IV. सही हो गया ना? IV and 5 into 1.3. सही है. 5 ones are 5, 5 threes are 15 and 6.5. 6.5. Good. Okay, आगे आ जाइए. State what is represented by the value of gradient of the graph. Internal resistance, na? Very good. By the way, we have a negative sign, so negative of internal resistance would be, I think, better one. Okay, but it's up to you. So negative हम ब्रैकेट में लिख देते हैं and internal resistance. Okay, चलिए आगे आ जाइए. डन, खत्म. अबे लो, बेकार क्वेश्चन था यार ये तो. अच्छा जी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आ जाओ भाई. यूसुफ करेगा ये क्वेश्चन. यूसुफ प्लीज रीड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस. ओके. यस यूसुफ.
एक मिनट क्या क्या? Okay. One of the results of the alpha particle scattering experiment is that a very small minority of the alpha particles are scattered through angles greater than 90 degrees. Hmm. State what may be inferred about the structure of the atom from this result. That the nucleus is positively charged and most of the mass of the atom is concentrated in the nucleus. Okay, very good. Nucleus is positively charged. Okay, and uh, most of the mass is at the of the center of the atom. ये center in the nucleus कह सकते हो, या in the nucleus आप कह सकते हो, सही हो गया। और majority most of the mass are at the center of the atom. Okay, आगे आ जाइए। अच्छा बाय द वे, एक मिनट इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। Sir, हम्म। uh, what is this? For that question, can we write most of the atom is empty space? Will that? Okay, No, but no, no, no. actually, the observation, this observation doesn't show that way. Okay, Oh, this, like yeah, because they're saying that most of the deflection is basically greater than 90 degree. This shows that the center of the atom is mainly charged and mass. Okay, so that is why it causes the reflection. Okay, fine. चलो भाई आगे आ जाओ yeah, okay. यूसुफ। An alpha particle is made up of many other particles. No, of other particles. One of these particles is a proton. State and explain whether a proton is a fundamental particle. अच्छा, क्या चाहिए? So Yes, because proton has three quarks and is a hadron. अबे ऐसा चमाट पड़ेगा, यस क्यों बोल रहा है फिर ब्रो? फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो कॉर्क स्ट्रक्चर उनका नहीं होता है। ओके, fundamental particle should always be electron, fundamental particle should be neutrinos, fundamental particle are quarks. Okay, and those that are made up of quarks that are not fundamental. Okay, समझ रहे हैं ना? Yes. Proton has quark structure so it is not fundamental particle। चलिए भाई आगे आ जाइए। Proton is not like. अच्छा. A radioactive source produces a beam of alpha particles in a vacuum. The average current produced by the beam is 6.9 10 to the power minus 9. Calculate the average number of alpha particles passing through a fixed point in the beam in a time of 1 minute. ऐसे जी अच्छा, क्या करोगे? तो करंट यहाँ दिया पे हुआ है। बता दें। अबे आप बताओगे। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज कितना आएगा? चार्ज आई टी ओ अच्छा, बस 6.9 इंटू 1 इंटू 60। इंटू 60, गुड हो गया। कितना चार्ज आया? ये आया है, एक मिनट, ये आता है 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Exponent -7, fine, ये आ गया चार्ज, this much amount of charge in coulomb, right? Now they're और saying, इक्वल्स टू एनी रखना है इन्होंने। अबे नहीं नहीं, सिंपल सिंपल से रखना है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू एन ई, बेसिकली यस, लेकिन यहाँ पे सिंपल सिंपल से रखो, रोको। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, वन अल्फा पार्टिकल कंटेन 2 E। ओके, क्लियर? सो जी। अब बेसिकली अब आपके पास पता है कि भाई आपके पास वन अल्फा पार्टिकल कंटेन द चार्ज ऑफ 3.2 exponent -19। Okay, this is the charge of one alpha particle. Okay, and we want to make this much amount of charge, so one alpha particle has this much value of charge. Okay, okay, has this much value of charge in coulombs. Okay, but we want to make 4.14 exponent -7 coulomb of charge, so how many alpha particle do we want? Yes, ओके, सो यू वांट x is equals to 3.2 into 10, एक मिनट। 4.14 exponent 7 divided by 3.2 exponent -19, ये करना है।
सो 7 है, -19 है, 11 12 के आसपास वैल्यू आ रही होगी पावर की, एक्सपोनेंट -12, एक्सपोनेंट +12 एंड 1.29 in 10 to the power 12. 1.29 1.29 10 to the power 12. 1.3 एक्सपोनेंट 12 नेगेटिव में आएगा। गुड हो गया, वेरी गुड है, परफेक्ट। 1.3, हाँ सही, 1.3 एक्सपोनेंट 12, फाइन। आगे आ जाइए, लास्ट पार्ट। अच्छा बल्कि इसको Okay. छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिख रही है, फाइन, जस्ट स्किप इट। ओके, Okay. सो Sir, हाँ हाँ, चलिए एक और for है the previous जो so also contain the electric field, so you can skip it, okay? Yes, Imad, what you're saying? sir, for the previous question, why can't we use charge is equals to number of electrons times the elementary charge since we are Basically, looking for the charge? no, they're basically asking for the number of alpha particle, okay? They're not asking for the electrons, okay? That is the concept when you have electron, okay? An alpha particle has two electron or two positive charge, basically, not electron, two positively charged, which mean two times the elementary charge, okay? So that's why you have to consider that the factor of two, तो इस वजह से 3.2 बन रहा है, clear वो? जी sir. ओके परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो दिस पेपर इज कंप्लीटेड बाय द वे। नाउ तुम लोग ने अभी अटेम्प्ट करना है। अब बेटा दो दो पेपर दूंगा होमवर्क एक क्लास में। जून 2021 दिस इज अ वेरिएंट, इन मार्च 2021 ओके, sorry वो 22 होता है, 22। so these are the two paper for the homework before the tomorrow's class, okay? so जल्द इसको make sure करना है कि कंप्लीट हो जाए आज की कल की क्लास से पहले पहले, okay? and then I'll give you two more paper for tomorrow and then 4 to 5 paper throughout the week, okay? चलें, चलें जी, okay guys, take care बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Classes. हाफिज, अल्लाह हाफिज।